हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 8bit to 8k। तो आज हमारे पास है PS4 का एक थर्ड पार्टी कंट्रोलर रिवॉल्यूशन प्रो कंट्रोलर 3। सो लेट्स अनबॉक्स इट, शैल वी। So guys, this is Nacon Revolution Pro 3 controller. It is officially licensed for PS4 and जो इसकी build quality है, it's actually made up of plastic, but it feels premium and very comfortable in the hand. So it's very lightweight as compared to your PlayStation 4 controller. और जो इसका button layout अगर आप देखेंगे तो it has an option button, share button, then your touchpad, PlayStation home button, D-pad. So जो ये directional pad है ये थोड़ा सा mushy है, उतना tactile नहीं है, उतना क्लिकी नहीं है, बट आई थिंक इट्स स्टिल बेटर देन द PlayStation 4 डी पैड। एंड देन इट हैज़ असिमेट्रिकल जॉयस्टिक्स। सो बड़ा डिफरेंस वही है कि जो PlayStation 4 का जॉयस्टिक्स है दे आर सिमेट्रिकल जॉयस्टिक्स एंड इट्स मच मोर सिमिलर टू दी जॉयस्टिक्स ऑफ Xbox One। दोनों ही जॉयस्टिक्स कॉन्केव जॉयस्टिक्स हैं। सो इफ़ यू प्रिफर Xbox One कंट्रोलर देन आई थिंक दिस विल सर्व योर पर्पस। एंड काफ़ी कंफर्टेबल जॉयस्टिक्स हैं, बटन्स काफ़ी बड़े हैं। यू विल गेट ट्राइंगल, ओ, स्क्वायर एंड देन एक्स बटन। सेम मार्किंग है जैसा PlayStation 4 के कंट्रोलर में मार्किंग होती है, और कोई क्लिकी नहीं है, ज़्यादा क्लिकी नहीं है बटन्स। एंड बाकी जो ट्रिगर्स हैं एंड बम्पर्स हैं, द ट्रिगर्स हैं ये कर्व्ड हैं थोड़े, सो इट्स रियली गुड। और जो बम्पर्स हैं ये भी काफ़ी बड़े हैं एंड बम्पर्स आर एक्चुअली बिट क्लिकी। दूसरा, इसमें ये एक वायरलेस कंट्रोलर नहीं है, सो यू नीड अ वायर टू कनेक्ट इट। तो इसके साथ USB-C केबल आती है एंड दिस इज़ अ 3 मीटर USB-C केबल एंड ये ब्रेडेड केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो अगर आपका PlayStation आपके लिविंग रूम में रखा हुआ है देन आई थिंक इट कैन बी यूज बिकॉज 3 मीटर काफ़ी लेंथ है, बट या इट्स स्टिल नॉट अ वायरलेस कंट्रोलर एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद PC। सो अगर हम पीछे देखेंगे इसमें तो ये मोड हैं, इसमें मोड 1, मोड 2 एंड देन मोड PC। सो द मोड 1 and mode 2 are for PlayStation 4, 2 is for advanced mode to connect and download the softwares and that stuff, and then mode PC is to connect and play games on PC. Then guys, the next button is the profile button। तो ये जो profile button है ये आपको help करता है 4 प्रोफाइल सेव करने में। So it can hold up to 4 profiles, like one profile for your first person shooter, then the second profile can be for your racing title। So ये जो light आप देख रहे हैं, so this is for profile 1, profile 2, profile 3 and profile 4, so that you know which profile you are in currently। And then when it connects to PlayStation 4 then this will light up, will show the connection status, and also it has got RGB lighting around your right joystick। So red is for PC, blue is for PlayStation 4 and you can change it according to your liking। So आप ये RGB लाइटनिंग का पैटर्न चेंज कर सकते हैं यूजिंग इट्स सॉफ्टवेयर, और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इस लाइट का। एंड यू कैन स्विच बिटवीन योर प्रोफाइल्स ऑन द गो। दूसरा, एक हेडसेट जैक है, बिल्ट इन स्पीकर इसमें नहीं है, और टेक्सचर्ड ग्रिप है इसमें पीछे फॉर योर लॉन्ग गेम प्लेज। सो इट्स नॉट रबराइज्ड ग्रिप बट अ काइंड ऑफ टेक्सचर विच गिव्स इट अ प्रीमियम फील।
और काफ़ी लाइट वेट है ये कंट्रोलर। तो इसके साथ अलग से वेट्स हैं, जैसे 2 वेट्स हैं 10 ग्राम्स के, देन 14 ग्राम्स, 16 ग्राम्स। सो आप उसको पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। सो आप ट्राई कर सकते हैं विद डिफरेंट वेट्स। सो आपको जो सूट करे यू कैन पुट इट, एंड इट्स वेरी इजी टू स्वैप बिटवीन दी डिफरेंट वेट्स। एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है इसमें लाइट बार नहीं है। सो आई डोंट थिंक दैट दिस कंट्रोलर कैन वर्क विद PSVR, बिकॉज PSVR को लाइट बार की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू ट्रैक योर कंट्रोलर। So that's one thing other than the built-in speaker that's missing from this controller. And then it has got 4 customizable programmable buttons. So S1, S2, S3 and S4 जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं according to your liking, जैसे कि L3 और R3 को आप प्रोग्राम कर सकते हैं for instance with S1 और S3. So these are very comfortable and it will give you an edge over your competitor, and it will be a very good edge for you when you will be playing competitive games. सो आप मेली अटैक जैसे आपका हो गया या क्राउचिंग हो गई, सो कुछ फंक्शन जिसमें आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यूज़ करनी पड़ती हैं और इट्स नॉट दैट ईजियर टू पुल दोज मूव, so you can easily program these buttons S1, S2, S3 and S4. And also you have 4 different profiles, so you can program these buttons for 4 different games or 4 different genres of game. Like for FPS you can program these L3 and R3 for S1 and S3, or for your campaign mode you can program the crouching or something else with S1 and S3, or like your handbrake with S1 and S3. So it depends on you, but yeah, it's a good option that you get with this controller. And guys, let's compare it with the PS4 controller. तो फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा इसका बड़ा है एज कम्पेयर टू PS4 कंट्रोलर। आप देख सकते हैं ट्रिगर्स एंड योर बम्पर्स काफ़ी बड़े हैं एज कम्पेयर टू योर PS4 कंट्रोलर, और आई थिंक इट्स मोर कम्फर्टेबल देन योर PS4 कंट्रोलर। और Xbox One से अगर हम इसे कंपेयर करें तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू Xbox One कंट्रोलर, बट या इसका जो ग्रिप है अगर आप इसका ग्रिप को देखेंगे तो इसका ग्रिप में जो कर्व है आई थिंक इट मेक्स मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू Xbox One. And then you can also put weight in this controller, so that's a good thing. So guys, let's set this up. So you can go to this link for registering your controller. So go to Nacon site, and from there you can register your controller or download the software that accompanies this controller. So with the help of the software you can change the profiles and other settings. So this is the page where you need to register. And guys, you can download the user guide as well as the software without even registering to the Nacon site. But yeah, it's good to register on the site, because in future if they will have any discount then they'll trigger a mail for you, so that might come handy. So we have downloaded the user manual, and now we'll be downloading the drivers, and the drivers can be downloaded on Mac OS as well as on Windows. So दोनों पर ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, and the controller also supports PC as well as PS4. So that's a very good thing, because I'm not sure if this will be supporting PS5, or if there would be a new driver coming out for PS5. So guys, you need to connect the controller to your PC using the cable, the USB-C cable that comes with this controller, and then you need to select mode 2. So now we have logged in, and let's check the firmware update or software update if it's required. So yeah, everything is updated, so there's no requirement to update the firmware as well as software. And now these are the profiles, the 4 profiles that are already present with this controller. So like Nacon Neutral, it would be for your general purpose gaming, then the FPS, then FPS Pro, and Nacon Arcade. So let's check out what is the difference between these profiles, and how we can reprogram these profiles and save these profiles. So you can use this software for your PlayStation as well as your PC. So in order to save the profile, you need to launch this software, and then you can save your profile for both PlayStation as well as for your PC. So guys, you can change the sensitivity of both your left stick as well as right stick. So you can see that this is the left stick, and this is the current sensitivity setting, and this is the current sensitivity setting on your right stick. So you can change it, you can see the dead zone, then you can save it, or you can go to the test area. So click on the test area and then try pushing your right stick. So you'll get to know the change that this setting has caused to the sensitivity of your right stick. So you need to play with these settings to know which sensitivity suits you depending on your game
style. And then these are all the button layout, and from here you can remap your S1, S2, S3, S4 to any button that you like. And then you can also change the sensitivity of your triggers. So like currently it's set to 50%, so you need to press only 50% of the trigger for it to work. You don't have to push it uh, to the 100% mark, so you can change it from here. So if your trigger is set to 50%, then as soon as you put pressure and you push it to 50%, your gun will fire, and your opponent will have to push the trigger to 100% mark. So you will have an edge over your opponent. And you can also change your PS4 settings here. You can save it, and then you can click the profile button and you can jump within different profiles within a game. So guys, overall this controller seems very nice. It comes with a bag as well. It's a tough bag, so you can protect your controller with dust, and also it's easier to carry. And then it's not a wireless controller, but you get a very long cable with this, a USB-C cable. This is 3 meter long, and it's quite a sturdy cable it seems. So I don't think there would be any issue if you play this on your PC because of the length of this cable, as well as in your living room. But yeah, it depends. If you want a wireless controller, then this is not for you. And the controller is lightweight. It comes with the extra weight that you can put on this controller, and then it's a plastic build, but it feels very premium. So guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, and do check out my other videos as well.